Let me start with this question. A similar question like what we have done yesterday. Company has example 4. Can you see this? Is the screen is visible properly Yes, ma'am. Yes, at ma'am. your end? Yeah. Okay. So see this unsolved question. What he is asking here, company A has three divisions A, B and C. Their capabilities and other details are given below. Capacity in number of units, there are three divisions A, B and C, and capacity is given in the number of units 10,000, 10,000 and 10,000. Now material cost per unit is given 10, 10, 10. Processing cost per unit is given 20, 10, 10. And annual cost is given in amount rupees 2 lakhs, rupees 2 lakhs and rupees 1 lakh. Investment is done in two types, fixed assets and current assets. So fixed asset is 10 lakhs, 10 lakhs and 10 lakhs, same all over for all three departments, divisions. And current assets is also rupees 10 lakhs for all the three departments. Targeted ROI is 10% for first department A, and for second department B is 15% and for C is 20%. I hope it's visible. Let me otherwise make little more clear. Yes, ma'am. Visible. Visible, no? Okay. So at what price, he is asking you the question, at what price per unit? Per unit means we need to calculate per unit column. We need to have per unit column also. The product should be transferred from A to B and from B to C. So that this will be the question that will be asked from you. Rest all questions will not come. As per your syllabus, this is very, very important. So we are going to solve. This is a question which is similar to the one that we have done yesterday. So are you guys like ready? You have your books opened? Yes, ma'am. Okay. So make Yes. the columns quickly. I'm giving you 2 minutes. I will hold on for 2 minutes. You make the columns, and I really hope you remember how to make the columns. How many columns? First of all, three. Sorry, four. Particulars column, particulars ka column, and then A division ka column, B division ka column, and then C division ka column. But inside A, you will segregate the column of A into two parts. Means inside the column of A, you will have two partitions. Left hand side will be amount and right hand side will be per unit. Likewise for B and C. So I'm giving you 2 minutes to draw the lines. I'll hold on for you. Okay. As soon as you are done, you please let me know. कॉलम के पहले Statement of calculation of क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइस. So statement of ओके calculation of transfer price. ओके ये आपका हेडिंग रहेगा, स्टेटमेंट का हेडिंग रहेगा. कॉलम्स आपने बना लिए होंगे, पर्टिकुलर्स ए बी सी, और ए बी सी के यस अंदर टू सेग्रीगेशंस आपने किए होंगे, पर यूनिट एंड अमाउंट. ओके, सो लेट अस क्विकली बिगिन. सबसे पहले दिया हुआ है कैपेसिटी इन यूनिट्स, तो आप ए के ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 यूनिट्स. बी का भी 10,000 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 यूनिट्स. कोइंसिडेंटली सी का भी 10,000 यूनिट्स है, सो सी के लिए भी लिखेंगे आप 10,000 यूनिट्स. लिखा. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज, हमेशा याद रखो ट्रांसफर प्राइस में शुरुआत भी ट्रांसफर प्राइस से होती है, एंड भी ट्रांसफर प्राइस से होती है. तो लिखो सबसे पहले ट्रांसफर प्राइस. ओके, नाउ डन मैम. या now tell me what is the transfer price per unit of A. Is it given? नो No. Will it be there? Will we have to find it? नो No, नो मैम. because फर्स्ट डिवीजन के लिए कभी ट्रांसफर प्राइस होता ही नहीं है. ठीक है, तो नील कर दो. पर यूनिट और अमाउंट दोनों में नील करिए. और क्या खर्चे दिए हैं वैसे इसके? सबसे पहले दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तो आप भी लिखो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. मतलब सॉरी, आप सिर्फ लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट. पर यूनिट कितना है 10, तो आप भी पर यूनिट के कॉलम में लिखोगे 10. और किससे मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं?
कैपेसिटी नंबर ऑफ यूनिट्स वेरी गुड इन नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं ए के 10,000 वेरी गुड so 10,000 into 10 how much is your material का 1 amount lakh 1 lakh. 1 lakh very good similarly you have to do for processing cost 10 it is 20 per unit for A it is 20 per unit so 20 will be per unit and amount will be for amount you need to multiply this 20 with 10,000 units 2 lakh yes very good okay now we have annual fixed cost so what is annual fixed cost 2 lakh 2 lakh. write down 2 lakhs in amount column and tell me how we will find out per unit for fixed cost 2 lakh Divided by divided by 10,000. very good very good 2 lakhs will be divided by 10,000 so how much is the answer 20 20 per unit 20 per no units. it will be 20 per yeah 20 per unit correct Yes, ma'am. correct okay so any other cost is given no then give me the total cost oh no, get me the total 50 cost per unit. 50 no per tell unit. no tell me the total of amount column 5 lakh 5 lakhs 5, now 5 5 lakhs lakh. will be divided with 10,000 5 lakhs will be divided by 10,000 and per unit will be 50 50 now check the Yes, ma'am. total is 50. 50 also check the total should also be 50 yes yeah then it is right yes now ma'am targeted ROI now write down after total cost you have to write down add target returns add target returns working note ma'am yeah working note you have to leave a few lines in the table टेबल में कुछ लाइंस छोड़ दो और नीचे आ जाओ वर्किंग नोट बनाओ लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ टारगेट रिटर्न्स आप नीचे उसकी फॉर्मूला लिखेंगे टारगेट रिटर्न्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला टोटल इन्वेस्टमेंट्स इनटू आरओआई परसेंटेज total investments into ROI percentage and for A नीचे A B C ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है for A tell me the total investments of A the total investments of A yes tell me the total investments of A guys am I audible yes am I audible 20 lakh total investment okay yes so A total investments is 20 lakhs very good A total investments is 20 lakhs and what is ROI of A what is ROI of A division A 2 lakh. 10% 10% very good so 20 lakhs into 10 10% percentage so how much it would be 20 lakhs into 10 percentage how much it 2 would lakh very good this 2 lakhs will 2 be lakh taken in the statement yes take this 2 lakhs in the statement tell me in the statement you have already written add target returns so for A how much is it in the amount column 2 lakhs so 2 lakhs will be divided again 2 by lakh 10,000 units and you will get per unit yes so what is per 20 unit yes 20 yes
नाउ टोटल कॉस्ट में टारगेट रिटर्न्स ऐड करेंगे. सो अमाउंट में अमाउंट ऐड किया तो आपको क्या मिला? टोटल कॉस्ट का अमाउंट प्लस टारगेट रिटर्न्स का अमाउंट. 7 lakh. ओके 7 lakhs divided by 10,000 units. 70 per unit. पर यूनिट 70 मीन्स अभी जो ए ने चार्ज किया बी से वो 79 रुपीज होगा. तो बी के लिए तो कॉस्ट हो जाएगा ना ये. तो अब बी के ट्रांसफर प्राइस में जाइए ऊपर ऊपर बिगिनिंग में. अब बी में आ जाओ, बी के कॉलम में. उसमें आपने लिखा होगा सबसे पहले ट्रांसफर प्राइस. उसके पर यूनिट में लिखेंगे हम ध्यान से. हाँ, पर यूनिट में कितना लिखेंगे? 70. और 70 को 70. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए के नंबर ऑफ यूनिट से कि बी के नंबर ऑफ यूनिट से? B के number of units. वेरी गुड. वो अलग बात है. हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ यूनिट्स, तीनों के नंबर ऑफ यूनिट्स सेम है. ठीक है. तो बी के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 10,000 इंटू बी Yes. का पर यूनिट कितना है? 70. सो 70 इंटू 10, 70. 10,000. 7 lakh. Very good. 7 lakhs. I have a little internet connection problem today. Guys, am I audible? Yes, ma'am. Yeah, sorry, I have a connection problem today. So therefore it is getting disconnected again and again. Anyways, now I'm giving you 2 minutes for noting down material cost per unit, process cost per unit, and fixed cost. You all tell me what should be my total cost of department B, division B. Okay. तो आपने क्या किया होगा? मटेरियल 10 पर यूनिट इंटू 10,000 1 लाख. प्रोसेसिंग कॉस्ट सेम 1 लाख. फिक्स कॉस्ट 2 लाख Yes. दिया हुआ है, उसका पर यूनिट होगा 20. Yes. तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आया बी का? 11 lakh. वेरी गुड. टारगेट रिटर्न्स आपने कैलकुलेट किए? देखो, टोटल Yes, ma'am. इन्वेस्टमेंट्स इनटू Yes, आरओआई. ma'am. टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी है आपकी बी की? 20 lakh. नीचे वर्किंग 20 नोट में lakhs. किया होगा आपने. 20 lakhs इंटू हाउ मच Yes, परसेंटेज ma'am. ऑफ आरओआई? 15%. सो 20 lakhs इंटू 15%. 15% इज हाउ मच? 3 lakh. वेरी 3 गुड. lakhs. वेरी गुड. सो टोटल कॉस्ट आपकी आई है 11 lakhs एंड आपका टारगेट रिटर्न्स आपका आया 15. सॉरी, हाउ मच? 30 3 lakhs. lakh. 3 lakhs. 3 lakhs. So 11 plus 3. What would be your transfer price का amount? 140. 14. 14 lakhs. 140 per 14 unit. Yes, 14 14 lakhs. lakhs. So 14 lakhs will be divided by 10,000 units. You will get per unit. Yes, ma'am. 140 per unit. 140. Okay, 140. Correct. So 140 will be taken to the cost of C. It will become cost for department C. So C के इधर ट्रांसफर प्राइस जो बिगिनिंग में लिखा है आपने, वहां पर यूनिट में लिखेंगे 140. लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सी. तो सी के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000. सो 140 इंटू 10,000 इज हाउ मच? 14 lakh. lakhs. वो कोइंसिडेंटली सेम है, जरूरी नहीं है सेम आइए. ठीक है, 14 lakhs Yes, आया. ma'am. अब आप मटेरियल, Yes, ma'am. प्रोसेसिंग कॉस्ट और एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ये करके टोटल कॉस्ट निकालिए और फिर मुझे बताइए. So what is your answer for total cost of department C? 17 Ma'am, lakh. 17 lakhs. 17 lakhs will be divided with 10,000 units, so you'll get 170 per unit. Is it right? yes, ma'am. Yes. टारगेट रिटर्न्स. अब टारगेट रिटर्न्स सेम वैसे जैसे हमने ए और बी का किया वैसे आप सी का करोगे. टोटल इन्वेस्टमेंट है 20 lakhs और आरओआई की परसेंटेज है 20%. So tell me 20 lakhs into 4 lakh. 20%. Very good, 4 lakhs. 4 So lakh. 4 lakhs will be added in the question, in the total cost.
और 4 lakhs का आपको per unit भी निकालना है. 40. 40, very good. So what is the transfer price after adding total cost in target returns? 21 lakh. 21 lakhs divided by 10,000. So how much it would be as in the terms of per unit? 210. 210.00, correct. Therefore लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखना है वो कैसे लिखना है लिखिए, मैं आपको बताती हूँ. लिखो. Therefore the transfer price per unit therefore the transfer price per unit from A to B is rupees. Tell me per unit कितना है? A to B कितना है? A का आंसर क्या आया था जो B में गया? Ma'am, 70. 70. Very 70. good, very good. So from A to B is rupees 70. Is rupees 70. And from B to C is rupees I think 140 na? I think. Yes, ma'am. 140. Yes, ma'am. ठीक है. So from B to C and from B to C is rupees 140. Is rupees 140. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Yeah. Okay. I'm giving you now material. See this 9th question. Now you guys have to do. I'll wait for you to check. I mean, sorry. I will wait for you all, and then we will have a quick check after you complete the question. See, TP Limited has 3 divisions, U, Okay, V, and W. Their capacities and other details are as under. Capacities तीनों की दी हुई है नंबर ऑफ यूनिट के टर्म्स में. U का 12,000, V का भी 12, W का भी 12. कुछ खर्चे भी दिए हुए हैं. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10, 12, 10. Processing cost is 20, 20, 10. And annual fixed cost is also given for all the 3 departments. Investments is done again in 2 different types, fixed assets and current assets. Okay, and targeted ROI is for U 10%, for V 12%, and for W 16%. So what question will be asked from you? That at what price per unit product should be transferred from U to V and from V to W? So this will be the question that will be asked from you. Will you be able to do it right now yourself? Yes, ma'am. Yeah, do it. Ma'am. I'll be waiting for you. You have to do it by your own. And I will check with your answers. Okay? Okay, ma'am. So is 15 minutes okay for you? Yes, ma'am. Yeah, 15 minutes from now and we will be done with the question. Sum number 9, unsolved sum.